ओके सो जैसे पिछले वीक में करा था आपने, पहले लॉन्ग आंसर लर्न करेंगे फिर शॉर्ट आंसर, ठीक है। क्लियर टू यू? पहले लॉन्ग आंसर लर्न करेंगे फिर शॉर्ट आंसर लर्न, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले मैं अनम्यूट कर देता हूं दर्शना। Yes, sir. गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर आंसर, है ना। चलो फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दर्शना आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, What is the difference between? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन What is the difference between ट्रोपोस्फियर, troposphere, ट्रोपोस्फियर troposphere, एंड स्ट्रेटोस्फियर? and stratosphere? एक्सप्लेन। Explain. एंड स्ट्रेटोस्फियर, And stratosphere. एक्सप्लेन। Explain. ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में क्या डिफरेंस है, उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर ट्रोपोस्फियर, है ना। फर्स्ट, Tropos. दिस इज द फर्स्ट लेयर, This is the first layer. दिस इज द फर्स्ट लेयर This is the first layer ऑफ द एटमॉस्फियर, of the atmosphere. ऑफ द एटमॉस्फियर Of the atmosphere. जस्ट अबोव टू द ग्राउंड। Just about to the ground. दिस इज द फर्स्ट लेयर This is the first layer of the atmosphere of the atmosphere. just above to the ground. Just about to the ground. Troposphere is where, Troposphere is where. troposphere is where Troposphere is where we live in, we live in. we live in. We live in. Troposphere is where, Troposphere is where. troposphere is where Troposphere is where most aeroplanes fly, most aeroplanes fly. most aeroplanes fly. Most aeroplanes fly. The weather changes, The weather changes. the weather changes The weather changes take place in this layer, take place in this layer. take place in this layer. Take place in this air. ओके ये हो गया ट्रोपोस्फियर। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर, है ना। दिस इज द सेकेंड लेयर, This is the second layer. दिस इज द सेकेंड लेयर This is the second layer ऑफ द एटमॉस्फियर, of the atmosphere. ऑफ द एटमॉस्फियर। Of the atmosphere. द ओजोन लेयर, The ozone layer. द ओजोन लेयर The ozone layer इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, is a part of stratosphere. क्या हुआ दर्शना? बेटा क्या हो गया? Yes, sir. Sir, unmute हो रही बार में. चलो ठीक है। The ozone layer The ozone layer is a part of stratosphere. is a part of the stratosphere.
The ozone layer The ozone layer is a part of stratosphere. is a part of stratosphere. Okay. B. The ozone layer The ozone layer absorbs harmful radiations. absorbs harmful radiations. The ozone layer The ozone layer absorbs harmful absorbs harmful radiations radiations from the sun, from the sun, from the sun, from the sun, and stops them from reaching, and stops them from reaching, and stops them from reaching and stops them from reaching Earth's surface. Earth's surface. Earth's surface. Earth's surface. Jet planes fly in the stratosphere. 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 Clear answer? Now, Darshana, one time read question plus answer. Question first. What is the differences between troposphere and stratosphere? Explain. First, troposphere. This is the first layer of the atmosphere just above to the ground. Second, troposphere is where we live in. Third, troposphere is where most aeroplanes fly. Fourth, the weather changes take place in this layer. Second, stratosphere. This is the second layer of the atmosphere. The ozone layer is a part of stratosphere. The ozone layer absorbs harmful radiations from the sun and stops them from reaching Earth's surface. Jet planes fly in the stratosphere. Okay, good बेटा. चलो. First answer सबको complete. Clear? Any confusion for any student? No one? Simple answers. Simple answer means okay. सेकेंड के लिए अपन दो तीन स्टूडेंट्स को कर लेते हैं. एक ले लेते हैं अपन इशिता और एक ले लेते हैं सयोनी. इशिता सयोनी दोनों को आवाज आ रही है? यस सर. ओके. और एक ले लेते हैं अपन, एक ले लेते हैं शुभ. तीनों को आवाज आ रही है? ओके सर. चलो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन जैसे अभी रचना ने रिपीट करा वैसे ही रिपीट करेंगे अपन, है ना? ओके. क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रूव दैट How will you prove that? how will you prove that How will you prove that air exerts pressure? air exerts pressure? How will you prove that How will you prove that air exerts pressure? air exerts pressure? Explain with the help of a diagram. Explain with the help of a diagram. Okay. एयर प्रेशर कैसे लगाता है ये कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, हम देखते हैं आंसर. Fill the plastic cup with water. 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 Fill the plastic cup of water.
Place the index card. Place the index card. Place the index card Place the index card on top of the cup. 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 Hold the index card tightly. Hold the index card tightly. Hold the index card tightly Hold the index card tightly against the mouth of the plastic cup. against the cup. Against the mouth of the plastic cup. Against the of the plastic cup. And turn the cup upside down. And turn upside down. And turn the cup upside down. And turn the cup upside down. Carefully remove your hand. Carefully remove your hand. Carefully remove your hand. Carefully remove your hand. Holding the index card in place. 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 You will observe that. You will observe that. You will observe that. You will observe that. The index card does not fall. 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 It is because. It is because. It is because. It is because. The pressure of air. The pressure of air. It is because. It is because. The pressure of air. The pressure of air. Outside the plastic cup. Outside the plastic cup. Outside the plastic cup. Is pushing the card up. Is pushing the card up. Is pushing the card up. It pushing the card up. This shows that. This shows that. This shows that. This shows that Air exert pressures on object. air exerts pressure on object. This shows that. This shows that Air exerts pressure on object. air exerts pressure on object. क्लियर? चलो अब कौन रिपीट करेगा इस आंसर को? सयोनी, आपकी भी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, तो अपन करवाते हैं. वेट अ सेकेंड. चलो इशिता, इस आंसर क्वेश्चन और आंसर को दोनों को रिपीट करो. How will you prove that air excess pressure? Explain with the help of a diagram. Fill the plastic cup the water. Place the index card on top of the cup. Hold the index card tightly against it, the mouth of the plastic cup, and turn the cup upside down. Carefully remove your hand holding the index card in place.
you will observe that the index card does not fall. It is because the pressure of air outside the plastic cup is pushing the card up. pushing. This shows that air excess pressure on objects. ओके, ये पुशिंग है बेटा ना, पुशिंग नहीं है, पुशिंग है ना। पुश करते ना अपन किसी भी चीज को, धक्का मारते हैं तो वो पुश करना। ओके, चलो एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, क्या मतलब क्या था कि एयर प्रेशर लगाता है क्या, तो अपन देखते हैं हाँ लगाता है। कैसे? एक कप को, प्लास्टिक कप को वाटर से भर दिया हमने, ठीक है, उसके ऊपर क्या रख दिया अपन ने, एक कार्ड रख दिया, ठीक है, कौन सा भी कार्ड रख दिया, ठीक है। होल्ड द इंडेक्स कार्ड टाइटली, है ना। अब उस कार्ड को क्या करना है, आप लोग को टाइटली पकड़ना है ना। उस इंडेक्स कार्ड को क्या करना है, टाइटली पकड़ना है, ठीक है। एंड टर्न द कप अपसाइड डाउन, मतलब उसको उल्टा कर देना है ना। उस कप को क्या करना है, उल्टा करना। केयरफुली रिमूव योर हैंड होल्डिंग द इंडेक्स कार्ड इन प्लेस। उस कप को उस हैंड को क्या करना है, आप लोग को रिमूव करना है अपने हैंड को, है ना, और होल्डिंग कार्ड को उसी जगह पे रहने देना। ओके, हमें क्या मिलेगा कि जो इंडेक्स कार्ड है वो गिरता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, ठीक है, उस कार्ड के ऊपर, ठीक है। इससे हम लोग को पता पड़ता है कि एयर प्रेशर लगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रियांशी। प्रियांशी, चलो कुमकुम, प्रियांशी आवाज आ रही है? चलो कुमकुम, और एक हो जाता है कल्प। एक कल्प, और एक हो जाएगा चलो बस एक और ले लेते हैं। ये किसकी आईडी है? नीलेश नेम से किसकी आईडी है? चलो ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हो गए। कौन कौन है नेम बता दो। एक केशवी, चलो ठीक है, केशवी। यस। कौन कौन हो गए, नेम बता दो अपने। बेटा नेम बोलो, कौन कौन हो गए हैं? कल, केशवी, और एक और। चलो 2 ही हुए क्या? रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे अपन रिपीट करते थे वैसे ही रिपीट करेंगे अपन, ठीक है। 3, डिफाइन डिस्टिलेशन। Define distillation. Define distillation. डिफाइन डिस्टिलेशन Define Define distillation. distillation and lists the steps and And steps step and list the steps and list the and step involved in this process. involved in involved in this process. Involved in this process. Involved in this process. Answer. Distillation is a process. Distillation is a process. is a process. Distillation is a process Distillation is a Distillation is process a process
that can be used That can That be used. can be used. that can be used That can be used That can be used to separate a pure liquid to to separate a pure liquid. to separate a pure liquid to To separate the separate a pure liquid pure liquid from a mixture of liquids from a mixture of from a liquid mixture of liquids due to the difference due to the difference due to the difference due to the difference due to due to the the difference difference in their boiling points. in their in boiling their boiling point. points. The process involves The process The involves process involves the process involves the the process process involves the involves following steps. the the following following steps. steps. First, impure water is heated in around Pure Impure water is heated in around water. impure water is heated in around impure Pure water is heated in around water. bottom flask. Bottom bottom flask. flask. Impure water is heated in around Impure water Pure is water is heated in around heated in bottom flask. bottom flask. Water evaporates. Water evaporates. evaporates. Water evaporates Water Water evaporates evaporates to form water vapor. to to from form water water vapor vapor. To form water vapor to To form water form water vapor. vapor. and the impurities are left behind. And the impurities are left The behind. impurities are left behind. And the impurities are left behind. And the impurities And are the left impurities are behind. left behind. Water vapor passes through. Water vapor passes Water through. vapor passes through. Water vapor passes through Water vapor passes Water through vapor passes through the condenser. the condenser. the condenser. The condenser The condenser and The cools, condenser and cools down to form water. and and cools down to form water. and cools down to form water. And cools down to form water. And cool down to And form cools down to water. form water. Pure water is collected. Pure water is collected. Pure water is collected Pure water is collected Pure water is collected in a separate container. in a separate in a container. separate In a separate container. In a separate container. ठीक है? अब केशवी एक काम करो, क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर लो. Different distribution and list the फिर steps. से बोलो, फिर से बोलो. Distance, define destination and list the step involved in the process. The distillation is a process that can be used to separate the pure liquid from a mixture of liquid. Due to the difference in the boiling point, this process involves the following steps. Impure water
is heated in around bottom flat. Second, Water evaporates to the to form form water vapor, and impurities are left behind. Third, water vapor pass through the container and cool down the form water. Fourth, pure water is collected in a separate container. ओके चलो एक और स्टूडेंट इसको रिपीट करेगा कल एक बार फिर से देख लेते हैं आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है कहाँ गए चलो Yes, sir. Babu. क्वेश्चन और आंसर दोनों Yes, sir. Define distillation and list the steps Slowly, involved in this process. slowly, बिल्कुल slowly. Define distillation and list the steps involved in the process. Distillation is a process that can be used to separate a pure liquid from a mixture of liquids due to the difference in their boiling points. The process involves the following steps. First, improve water in heated in around bottom flask. Second, water evaporates to form water vapor and the impurities are left behind. Third, water vapor passes through the conditioner and cools down to form water. Fourth, pure water is collected in a separate container. ओके चलो ये हो गया कंप्लीट 3 आंसर कंप्लीट कर लिए हैं नाउ योर होमवर्क इज लर्न दिस 3 आंसर्स ऑल ऑफ यू क्लियर Yes, sir. 3 आंसर्स ये 3 आंसर्स लर्न करो सेंड मी थम्स अप अगर होमवर्क समझ में आ गया है ओके चलो इनको लर्न करना आंसर को ठीक है